Hello students, hope all are doing well and safe at home. Okay, today I am going to start a new topic, that is financial management. Financial management from part B. आपके book में part B से first chapter, that is financial management. So let us talk what is financial management. So in financial management, this chapter is divided into three categories. Then it is number 1, concept of financial management. Okay, in this financial management we are going to study concept of financial management, concept of financial planning, concept of capital structure. So three important headings are there: financial management, concept of financial management, concept of financial planning and concept of financial structure. So today I am going to teach concept of financial management. Concept of financial management. What is concept of financial management? Before going to the concept of financial management, I want to discuss something about the concept of business finance. Concept of business finance. What is mean by business finance? आप जानते ही हैं, business finance, the finance or the money required to carry on the business activities. The money required to carry on the business activities are known as a business finance. Okay, so financial management, the heading से ही आपको समझ में आ गया होगा क्या है, managing the finance. Okay, so finance, for what purpose we have to manage the finance? Business finance को manage करना है. What are all the money involved in the business, how we are going to manage the money which is involved in the business, that is known as a financial management. So under the concept of business finance हम लोगों को ये देखना है कि business finance क्या है. So whatever the money required for carry on the activities of the business, that is known as a business finance. Okay, किस purpose के लिए business finance में आपको business में आपको finance चाहिए? So first of all we need finance to invest in fixed assets. Two items are very important in the organization, in the business, to invest in the in fixed asset. Another one is to carry on day-to-day activities. So if it is a business, to carry on the business we need that is some investments. For what investment is needed? We have to invest the money into the fixed asset. आप जानते ही हैं कि एक बिजनेस में कोई भी बिजनेस होगा, डेफिनेटली वी नीड अ फिक्स्ड एसेट्स. ओके, सो फिक्स्ड एसेट में हम लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए भी हम लोगों को मनी चाहिए. देन कैरी ऑन द डे टू डे एक्टिविटीज़. सो फिक्स्ड एसेट्स में हम लोगों को कौन सा एसेट लाइक इन्वेस्ट हम लोग कहाँ पे करेंगे? प्लांट में हम कर सकते हैं, मशीनरी में हम कर सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग. So these are all the items, etc. These are all the items where we are going to invest our finance. Okay, that is known as a fixed capital. ये हम बोल सकते हैं the amount which is invested in the assets, that is known as a fixed capital. Okay, the next to carry on the day to day activities. जो भी day to day activities का होगा. For example, we need cash for paying wages. Okay, payment of wages, सैलरीज, बिल्स पेमेंट करना होगा हम लोगों को. देन इन्वेंट्री परचेज करना होगा. सो फॉर दिस all item to invest in these items or to purchase these items we need a cash. Okay, we need a finance. Okay, so यही है business finance. आपको business finance means आप क्या बोल रहे हैं?
ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में जो भी मनी आपको इन्वेस्ट करके बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए जो भी अमाउंट आप लगाएंगे, दैट इज नोन एज अ बिजनेस फाइनेंस। अब कहाँ कहाँ पे ये अमाउंट यूज होगा? टू परचेज अ फिक्स्ड एसेट्स एंड टू कैरी ऑन द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको बिजनेस फाइनेंस क्या है। ओके, सो with this we can say that the business finance, the finance is lifeblood of the business. What the finance is? Finance is lifeblood of the business. Okay, समझ में आ रहा है आपको फाइनेंस क्या है? इट इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। जैसा हमें सर्वाइव करने के लिए ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम बिजनेस का ब्लड कौन सा है? फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। अगर इफ द बिजनेस वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट, तो बिजनेस सर्वाइव करना है या ग्रो करना है, तो डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ finance. Okay, so for that we can say that finance is a lifeblood of the business. समझ में आ गया बच्चों? Financial business finance क्या है? Now we move on to the concept of business finance. Okay, financial management. Concept of financial management. What is the concept of financial management? हम देख चुके हैं व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। सो फाइनेंस जो भी इन्वॉल्व होगा बिजनेस में, दैट इज नोन एज अ बिजनेस फाइनेंस। नाउ वी हैव टू मैनेज द बिजनेस फाइनेंस। हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द बिजनेस फाइनेंस? हियर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स procuring the finance and disposing the finance. Okay, disposing or deployment of the finance. Okay, so इसी को हम बोलते हैं financial management. That means what the amount, required amount, उसको हम लोगों को procurement करना है। That means we have to obtain the finance. Okay, so जो finance हम obtain किए हैं, that finance has to be involved in the business. So deployment of the finance, deployment means what? It should be involved in the business. So उसको हम लोग distribute करना है। कैसा हम business में distribute करेंगे? So that is known as a financial management. So इसका हम explanation और भी देखेंगे। Before that, जो भी financial management में है, the person, those who are managing the finance is known as a financial manager. So what is the duty of the financial manager? It is a very important one. Financial manager का role बहुत ही important है business में, because अगर फाइनेंशियल मैनेजर जो है एफिशिएंट डिसीजन नहीं लिए, देन ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू द फेलियर ऑफ द बिजनेस. ओके, so we can say that a financial management and financial manager is very important for the business. Okay, what is the role of the financial manager here? So the role of the financial manager, first financial manager has to see procurement of finance. Okay, so procurement of finance में हम देखेंगे first the financial manager has to identify the various sources of finance. Okay, so procurement, we have to procure the finance. So how we are going to procure the finance? For that, financial manager has to identify the various sources of finance. So various sources, whatever the sources are available, from the sources we have to procure the funds. Okay, so ये भी हम लोगों को देखना है जहाँ जो भी sources available, क्या वो sources से हम finance को avail कर देंगे? Never. तो जो भी sources available है, from the sources we have to see that there is a minimum cost and minimum risk. Cost भी minimum होना चाहिए, risk भी minimum होना चाहिए. So from where we can get the source with minimum cost and minimum risk, वो हम लोगों को identify करना चाहिए. So procurement of finance is very important. For that we have to identify the various sources of finance, and from the sources of finance we have to select the one which has very minimum cost and minimum risk. This is the important decision has to be taken by the financial manager. Then second one is, once the procurement is over, then next हम लोगों को ये देखना चाहिए जो भी amount होगा, ये amount को हम लोगों को क्या करना है? Deploy करना चाहिए. Amount को हम लोगों को क्या करना होगा? Deployment of finance.
Deployment of finance in the sense timely deployment or timely deployment of the finance. Timely procurement is also important, timely deployment is also important. That means for what purpose we are procuring the finance? We are procuring the finance to invest in the business, to carry on the activities of the business. Now here we have to decide, that is the financial manager has to decide where the finance is going to deploy. For example, already हम business finance में बोल चुकी है, like fixed assets में आपको deploy करना होगा, या current asset के लिए कितना amount आपको रखना होगा, देन वर्किंग कैपिटल के लिए कितना अमाउंट आपको रखना होगा. इस तरह आपको ये ध्यान देना होगा फॉर व्हाट आर ऑल द पर्पस और व्हाट आर ऑल द थिंग्स वेयर वी आर गोइंग टू डिप्लॉय द अमाउंट. सो हम लोगों को ये देखना चाहिए जो भी अमाउंट हम प्रोक्योर किए हैं, ये अमाउंट जो है सही जगह पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना होगा. सो सही जगह पे सही अमाउंट को इन्वेस्ट करना होगा. दिस इज द रोल प्लेड बाय द financial manager. This is very important decision taken by, has to be taken by the financial manager. Then what is the next thing? Next is ensure sufficient, that is amount जो है sufficient amount invest किए गए. Ensure that the sufficient amount is invested. See, whatever the amount we are procured, that should be deployed. देन डिप्लॉयमेंट के बाद हम लोग को ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी अमाउंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो सही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. ऐसा तो नहीं है जो भी कुछ अमाउंट जो है इट इज़ लाइंग आइडल, दैट मीन्स अमाउंट जो है ऐसे ही नहीं रहना चाहिए. अमाउंट हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. वॉट एवर द अमाउंट और वॉट एवर द फंड वी आर प्रोक्यूर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दैट फंड शुड बी डिप्लॉयड इन वेरियस एक्टिविटीज करेक्टली, एंड वी शुड नोट दैट वी शुड इंश्योर दैट द अमाउंट शुड नॉट बी लाइंग आइडल फंड जो है नहीं रहना चाहिए बिजनेस में. ये हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर. सो समझ में आ गया होगा आपको फाइनेंशियल मैनेजर क्या रोल प्ले कर रहे हैं. ओके, विद दिस विल सी द meaning or definition of the financial management. So financial management is efficient procurement of finance Okay, definition of the financial management is efficient procurement of finance, efficient utilization and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of the organization. So financial management क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करना होगा. फॉर दैट हम लोगों को फाइनेंस को मैनेज करना होगा. हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द फाइनेंस? एफिशिएंट प्रोक्यूरमेंट, अरेंजिंग फाइनेंस जो है एफिशिएंट वे में फाइनेंस अरेंज करेंगे. देन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, द अमाउंट विच इज अरेंज्ड दैट शुड बी यूटिलाइज्ड इन एफिशिएंट वे, एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस. इफ देयर इज एनी surplus in the business, then that should be disposed or distributed in the business or for the shareholders for smooth working of the organization. ये सब हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करना है तो फिनेंस का जो है इम्पॉर्टेंट रोल है. सो फिनेंस को हम ध्यान से मैनेज करेंगे, देन ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकते हैं. सो दिस इज द definition of financial management. Next we move on to the importance of financial management or role of financial management.
Okay students, next we move on to the role or importance of financial management. Financial management, why the financial management is important, or what are all the role played by the financial management in the organization or in the business. So first one is the size and composition of fixed asset. With the help of the financial management we can decide the size and composition of the fixed asset. How much money we are going to invest in the fixed asset, that is very important one. Why? Because if the amount which is procured by the business, all the amount is invested in the fixed asset, then automatically it blocked the amount is blocked in the fixed asset. So definitely it will affect the business. जितना भी amount होगा सभी amount को हम fixed asset में ही अगर invest कर लेंगे, then automatically it will be affected the business. So हमें ये ध्यान देना होगा what is the amount is to be deployed in the fixed asset. कितना हम लोगों को fixed asset चाहिए, या how much amount we have to invest in the fixed asset. This decision is taken by the financial manager. It is the importance of the financial management. They have to decide that जितना amount हम लोगों को invest करना होगा. For example 5,000 crore amount अगर हम लोगों के पास है, अगर हम चाहते हैं कि इसको as it is invest कर लें, then automatically क्या होगा, other work जो भी होगा ये वर्क को हम सही तरीक़ा से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सभी अमाउंट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट में ही ब्लॉक हो जाएगा. सो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द बिजनेस. सो ये हम लोगों को ध्यान देना होगा. देन नेक्स्ट क्वांटम ऑफ करंट एसेट. नाउ करंट एसेट के लिए भी वी नीड अ फाइनेंस. सो हियर द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट what is the amount which is to be given for the current asset. Like we have to pay the bills, inventories, then inventories purchase करना होगा, bills payment करना होगा, bills receivables, bills payables and bills receivables जैसा current assets है जिसमें हम लोगों को amount रखना होगा, like cash हमें चाहिए. So day to day activities, whatever the day to day activities are there, so ये day to day activities को हम लोग करने के लिए, perform करने के लिए डेफिनेटली हम लोगों के पास अमाउंट होना चाहिए. सो ये अमाउंट जो है डिसाइड होगा विद द हेल्प ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट. वट एवर द अमाउंट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड अमाउंट, उसके बेसिस में हम लोगों को करंट असेट में कितना अमाउंट रहना चाहिए ये हम देखेंगे. अगर ज़्यादा अमाउंट हम फिक्स्ड असेट में फिक्स कर लिए हैं, देन ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीज द नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल अमाउंट आल्सो. वर्किंग कैपिटल भी हम लोगों को क्या होगा, ज़्यादा चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हाट द क्वांटम ऑफ current asset needed in the business. Okay, the next जो है the amount of long term and the short term financing. long term and short term financing, जो finance हम arrange करना चाहते हैं, ये finance हम कैसा arrange करेंगे, whether we are going to the long term finance or short term finance, both the finance are available. long term need के लिए हम लोगों को finance चाहिए तो long term finance में हम जा सकते हैं, and short term finance में भी हम जा सकते हैं. so but the thing is different. long term finance में हम जाएंगे तो according to that हम लोगों को पेमेंट इंटरेस्ट वगैरह हम लोगों को पे करना होगा. सो वी हैव टू सी दैट विच इज़ एफिशिएंट फॉर द बिजनेस और विच इज़ बेनिफिट फॉर द बिजनेस. सो फिनेंस जो भी फिनेंस होगा, ऑलरेडी आई टोल्ड दैट द फिनेंस जो प्रोक्योर हम लोग करने जा रहे हैं, वी मस्ट सी दैट देयर इज़ अ मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम रिस्क. सो ये हम लोगों को ध्यान दे के अगर हम फिनेंस को प्रोक्योर करेंगे देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम. ओके, सो ये भी डिसाइड करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. द नेक्स्ट जो है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेबिट एंड इक्विटी. Here if you are going to long term finance, okay, so long term finance हम लोग जाएंगे तो then हम लोगों को देखना होगा there is two types of long term finance. one is debt, another one is equity. so debt means आप जानते हैं it is a borrowed fund. it is what? It is a borrowed fund. For borrowed fund means what? We can go for issue of debentures and borrow from the financial institution, other financial institutions and banks to run the organization. okay, ये भी हम कर सकते हैं. अदरवाइज वी कैन गो फॉर इक्विटी. इक्विटी इन द सेंस शेयर होल्डर्स, बाय इश्यूइंग शेयर्स
हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस शेयर इश्यू करके और बाय इश्यूइंग एडिशनल शेयर्स वी कैन रेज द फंड. ओके, सो लॉन्ग टर्म में हम रेज कर सकते हैं. बट दिस इज ऑल्सो वी हैव टू सी दैट डेप्ट एंड इक्विटी में हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि डेप्ट, इफ यू आर गोइंग फॉर डेप्ट डेफिनेटली वी हैव टू पे इंटरेस्ट. सो कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये देखना होगा अगर हम डेप्ट में जा सकते हैं या इक्विटी में जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगेन हियर द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू डिसाइड द थिंग्स लाइक by seeing the profit and loss account also, by taking into consideration the profit and loss account. Why? Because profit and loss account से भी क्या होगा, अफेक्ट होने का चांसेस आर देयर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे जहाँ पे एंटर करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो हम लोग यहाँ पे जो डेप्ट ले रहे हैं एंड अदर थिंग्स जो भी होगा, सो इसमें क्या होगा, वी हैव टू पे द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना होगा. सो इंटरेस्ट भी हम लोग लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, हम लोगों को एक्सपेंसेस में दिखाना होगा. देन फिक्स्ड एसेट में हम इन्वेस्ट करके रखे हैं. देन डेप्रिशिएशन. सो दिस आर ऑल द अमाउंट विच रिड्यूसेस द प्रॉफिट, विच रिड्यूसेस द प्रॉफिट. सो ये अगेन हम लोगों को देखना होगा, वी हैव टू पे टैक्स एंड अदर थिंग्स. ये सब वी हैव टू शो ऑल द थिंग्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो अकॉर्डिंग टू दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू डिसाइड कि हम लोग किस तरह का जो है ये जो फिनेंस जो है हम लोग अवेल करेंगे या फिनेंस को हम मैनेज करेंगे. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. गॉट इट बच्चों, समझ में आया आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? ओके, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द objectives of the financial management. Okay students, next we move on to the objectives of financial management. Objectives of financial management we are here divided into two groups. One is primary objectives and secondary objectives. What is the primary objective? Primary objective means increasing the wealth of maximizing the wealth of shareholder or maximizing the prosperity of shareholder, wealth and prosperity of shareholder. That is the primary objective of the financial management. So financial management में आपको ये देखना होगा shareholders का wealth को maximize करना होगा, because the company is running with the shareholders only. company जो भी है, company का जो भी fund होगा, the fund of the company belongs to the shareholder. So definitely we have to invest the fund like that, like the manner that we have to increase the wealth of the shareholders. When the shareholders wealth increases or shareholders prosperity increases, then automatically the share value increases in the market. Value of the share increases in the market, isn't it? So shareholders का जब हम लोग को prosperity को हम लोग increase करेंगे, then automatically shares value क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो ये कैसा हो सकता है? ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट. जितना हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग अर्न करने का कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज होगा, शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज होगा. सो व्हेन शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीजेस, देन ऑटोमेटिकली द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी इंक्रीज्ड. सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस को जो है एफिशिएंटली हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. सो दिस इज द primary objectives. So primary objectives is what? Maximizing the wealth of the shareholder, maximizing the wealth of the shareholder. Then what is the secondary objective? Secondary objective is nothing but जो primary objective है, ये primary objectives को कैसे हम achieve करेंगे? We told that the primary objective of the business or the primary objective of the organization is increase the financial management is increase the वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. सो ये वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स को कैसा हम लोग इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा आने से ही हम क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स का वेल्थ को हम इंक्रीज कर सकते हैं. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन.
they have to deploy the fund in such a manner that the profit must be increased, or we can say that efficient utilization of funds. Okay, so efficiently अगर fund को utilize करेंगे with the help of the financial management का यही objective रहेगा, whatever the funds procured that should be utilized efficiently. When the funds utilized efficiently, इसका मतलब ये होगा जो भी हम लोग funds हम लोग utilize कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसका benefit ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम द कॉस्ट. जब हम उसको प्रोक्यूर किए थे तब जो कॉस्ट हम लोगों को स्पेंड करना पड़ा उस कॉस्ट से भी ज़्यादा हमको क्या चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए. देन ओनली वी कैन से दैट द फंड इज इन्वेस्टेड और द फंड इज यूटिलाइज्ड इन इफेक्टिव मैनर. समझ में आया? सो अगर हम शेयर होल्डर्स का वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं देन वी हैव टू ट्राई टू इंक्रीज अवर प्रॉफिट. सो ये कैसा होगा, बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड. सो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, कॉस्ट कम होना चाहिए एंड उससे जो हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है दैट बेनिफिट विल बी मोर. सो देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. Okay, then next what we have to do, availability of funds at a reasonable cost. Again हम लोग को यहाँ पे देखना होगा whenever we are going to arrange the funds whatever required for the business, so the funds का availability देखना चाहिए. The funds available in minimum cost at reasonable cost. जो reasonable cost में आपको मिलेगा, like debt हम लोगों को देखना चाहिए. If you are going to debt borrowed fund, debentures हम लोग लेना चाहते हैं या financial institution से लेना चाहते हैं, वी हैव टू एनालाइज दैट वेदर द डिबेंचर जो भी अमाउंट है उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा या अदर प्रोक्योरमेंट जहाँ पे अदर सोर्सेस से हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं फंड वहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा. सो विच एवर इज लेस, जो कम रहता है वही हम लोग क्या करेंगे, प्रोक्योर करेंगे. सो वी हैव टू सी दैट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट. जहाँ पे आपको रीजनेबल कॉस्ट में फंड्स मिलेगा वहीं से आपको फंड्स को अरेंज करना होगा. अगेन वी हैव टू सी दैट मेंटेनिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी. अगेन हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में एडिक्वेट लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरत है. एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द सेंस वी मस्ट नीड that is we must need some amount in cash, that is or something which is converted into cash, like day to day activities के लिए या some reason में emergency में हम लोगों को चाहिए तब हम लोग क्या करेंगे, liquidity that is day to day activities के लिए हम लोगों को अमाउंट चाहिए. ये adequate हम लोगों के पास रहना ज़रूरी है. In case if it is not there then automatically it will create lot of problem in the organization. So ये भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. Maintaining adequate liquidity, adequate liquidity को maintain करना, that decision also very important one. Then again हम लोगों को देखना चाहिए ensure safety of fund. So जो भी fund होगा उसका safety हम लोगों को देखना चाहिए. Like we are earning more and more profit, then we have to decide that the amount of reserve and reinvestment. कितना amount हम लोग reserve में रख सकते हैं, कितना amount reinvest कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर reinvest करेंगे so क्या हो सकता है कि retain on profit जो भी होगा ये reinvest करने में क्या होता है, जो बाहर हम लोग interest cost हम लोग का spend करना पड़ता है when we are arranging the fund, so it will minimize. अपना ही profit को अपना ही business में अगर reinvest करेंगे तो definitely what happen, it will reduce the cost. Then again हम लोगों को देखना चाहिए reserve. Some amount should be kept in reserve to use at the time of emergency. To use at the time of emergency. ये नहीं है कि जितना भी earnings होगा ये सारा earnings को disperse कर दे among the shareholders और कुछ कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. Safety of the fund is very important. So safety कैसा कर सकते हैं, by reinvesting the fund into the business और by creating reserve हम क्या कर सकते हैं, fund को safe रख सकते हैं. Again हम लोगों को देखना होगा avoiding idle finance. Already I told you in the role of manager, financial manager, then financial manager has to ensure that there should not be idle fund. So idle fund वहाँ पे नहीं होना चाहिए, because if the fund is lying idle without investing anything then automatically it create waste and the cost is increased. क्यों, हम ला कर रखे हैं फंड बिजनेस में यूटिलाइज करने के लिए. डेफिनेटली if you are utilizing the fund in the business or not,
It is not a matter. If once we procured the fund, then automatically we have to spend the cost. So if it is lying idle, then automatically it is creating problem, isn't it? हम लोग को क्या करना है? बैंक में पैसा डालने से हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा. अगर घर में ऐसे ही पैसा पड़ा रहेगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना. इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हम लोग को ऐसे ही पड़ा रहेगा. या कई जगह से कहीं से हम लोग फंड लेकर आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल कुछ हम लोगों को खरीदना था, हम क्या कर रहे हैं? फंड लेकर आए. बट क्या है कि खरीदे नहीं, फंड को रखे. लेकिन जहाँ से हम फंड लेकर आए हैं वहाँ पे डेफिनेटली वी हैव टू पे इंटरेस्ट. सो इसमें आप देखिए, सोच के देखिए, लाइंग आइडियल इज इम्पॉर्टेंट और लाइंग आइडियल इज ओके. आप फंड ला के रखें, उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इट इज ओके फॉर द बिजनेस? नो. घर में भी यही है, बिजनेस में भी यही है. फंड जो भी आप प्रोक्योर किए हैं, ये फंड को सही जगह पे आपको इन्वेस्ट करना होगा, सही यूटिलाइजेशन करना होगा. आइडल फंड जो है वेस्टेज है. आइडल फंड क्या है? वेस्टेज है एंड कॉस्ट आपको इंक्रीज होगा. ओके, सो दिस आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ये है कि विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स अगर ये हम फुलफिल कर लिए देन ऑटोमेटिकली हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली हम फुलफिल कर सकते हैं. So once the primary objective be fulfilled हो गया, then we can say that how it is fulfilled by efficient management. So with this we can say that efficient success of a business is success of the business is lead with the efficient financial management, or we can say that efficient management leads to the success of the business. Inefficient management leads, inefficient financial management leads to the failure of the business. Okay students, I hope आपको समझ में आ गया होगा जो भी टॉपिक पढ़े. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, बट आप एक बार और गो थ्रू करेंगे, समझकर पढ़ने का कोशिश करेंगे, सो डेफिनेटली इट इज़ ईजी फॉर यू एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि फिनेंस नॉट ओनली यूजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली यूजिंग इन द बिजनेस, आप भी फिनेंस को डील कर रहे हैं अपने घर में. वेदर इट इज़ 1 रुपीज़ और इट इज़ अ मैटर ऑफ 1000 रुपीज़, फिनेंस इज़ अ फिनेंस. सो ये फिनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम फिनेंस को सब इफ़िशिएंट वे में यूटिलाइज करना. सेम अगर हम घर में भी करेंगे तो बहुत ही हम क्या कर सकते हैं? फिनेंस को सेफ हम लोग रख सकते हैं या हम लोग सेव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, विथ दिस आई एम कंक्लूडिंग हियर. नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बी होम, बी सेफ.